Well, so we have started discussion on superposition of simple harmonic motion, right? So yesterday we have taken that case like you have a two simple harmonic motion along x-axis. They have different amplitude and initial phase was different. Now, if they superimpose, then what kind of trajectory that it will follow the resultant equation of motion that we have observed. So when you have a case like two oscillator along x-axis, their equation is represented like x on t, that was some a on, then sine of omega t, and you have another simple harmonic motion along same direction, but amplitude is different. Okay, and also you have a initial phase was given for SHM number on, that is delta on, and for second motion it was delta 2, right? You can see from here you have a different amplitude, a on not equals to a2, and phase was different. Not phase was different, basically you have a initial phase that was delta 1 and delta 2. If you substitute time 0, you will get some phase factor. So this is called total phase factor. This is called total phase. With time, that phase will change. Initial phase means if you substitute t equals to 0, then you'll get phase, that is delta 1 and delta 2. If they superimpose, then resultant motion was x on t and plus x2 t, and that was if you sum, then you'll have a sine of omega t plus some phase theta. So this is the resultant displacement when they superimposed. So you can see this is again represent simple harmonic motion having same frequency as the frequency of individual oscillator. And that resultant amplitude that will be depends upon A1, A2 as well as delta 1, delta 2. Okay, and same is true for theta also. So that we have seen. Now let us solve a problem that was asked in JEST. So the question in JEST question, it was given you have three simple harmonic motion. You have three SHMs. Okay, they are along x direction. You have three SHMs, they are along x direction. And amplitudes are given. Amplitudes are not same. Okay, for amplitudes are given as for SHM number on, that is A. For second oscillator, it was 2 A by 2, and for last SHM, that is A by 3. And initial phase is given as for SHM number on, that was 0. For second, it was pi by 2, and for last, it was pi. Now you have to calculate. You have to calculate A. A means amplitude of the resultant of three SHMs. That you have to calculate. That was from previous year question from JEST. You have three SHM along x direction with different amplitude, different initial phase. You have to calculate that amplitude of resultant of three SHMs when they superimposed. That you have to calculate. Can you please try this one? So as you know that you can represent x on t. X on t, how will represent? That will be nothing but a sine of omega t, because initial phase delta 1 was 0. Same is you can represent x to t SHM simple harmonic motion of second oscillator, that can be represented as 5a by 5a by 3.
let us check. So second will have what? A by 2, then sine of क्या जाएगा पुनीत, बताओ, बताइए. Sir, omega t plus pi by 2. Exactly. So omega t plus pi by 2. And that will be how much? That will be a by 2 pi by 2 plus theta, that is nothing but cosine of omega t. And similarly, you can represent x3t. That will be how much? Amplitude is given a by 3 and initial phase is given pi. So that will be sine of omega t plus pi. And that will be minus a by 3 sine of omega t. Because sine pi plus theta, that will be minus sine theta. Now, if they superimpose, what will happen? If they superimpose, then resultant xt, that can be written as x on t plus x2 t, and then you have x3 of t. If you sum them, sum kijiye jara. If you sum them, you can see from here, for SHM number 1 and 3, they have sine of omega t, right? With different amplitude. So if you collect their amplitude, so a minus a by 3, that will be 2a by 3 sine of omega t, and then x2 t, that is nothing but what? That will be a by 2 cosine of omega t. So I have sum first 1 and 3, that will be sine of omega t a minus a by 3, that will be 2a by 3, and then you have x2t, that is a by 2 cosine of omega t. Now how will do? राजकिशोर बताओ कैसे करेंगे आप? राजकिशोर, टेल मी हाउ विल डू. डिफरेंशिएट करें सर? नहीं, आपको ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेंगे जो रिजल्टेंट और जो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन है, रिजल्टेंट इक्वेशन किस तरह की हो गई? विल इट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन? yes, because you have Yes, a sir. displacement is like this, right? So acceleration, that will del square x by dt square, that will be minus x will obtain, है ना? SHM के लिए कंडीशन क्या है? Acceleration should be proportional to minus of x. You will get from here, you can check. But how will proceed? How will calculate the resultant amplitude? If you remember yesterday, this is some constant factor, right? This is some constant factor, so I'll take a prime equals to how much? That will be your cosine of some theta initial. So this is a constant, right? So I have taken some this a prime equals to, sorry, a prime equals to how much? Or a prime cosine of theta, that is equals to 2a by 3, right? This is your a prime by a prime cosine theta, and a prime sine theta, I'll take that will be a by 2. Okay, so this is a constant, I can represent like this. Now I'll substitute it here, है ना? सेम जैसे आपका कल वाला जैसा है ना, सेम है जैसे वहां पे आपका कोसाइन ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ क्या था आपका a1 कोसाइन डेल्टा 1 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2, राइट? याद है ना? Yes, sir. हाँ, तो सेम उसी तरह है ये आपका, लाइक दैट. तो साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट को आपको क्या मानना पड़ेगा? सम एम्पलीट्यूड विद सम इनिशियल फेज फैक्टर, सो दैट यू हैव टू एज्यूम. सर, हाँ जी, बताइए. एम्पलीट्यूड ए का पार्ट बाहर लेके 2/3 को cos a डैश cos 2/3 को cos मतलब थीटा डैश ऐसा ले सकते हैं क्या हम? ए बाहर लेके सिर्फ 2/3 को. फिर कैसे करेंगे? आपका ए तो रह जाएगा ना? हाँ सर, मतलब लास्ट में ए आएगा, लेकिन a इंटू 2/3 साइन ओमेगा टी प्लस हाफ कॉस ओमेगा टी, लेट 2/3 इज इक्वल टू. कर सकते हो, कर सकते हो. कर सकते हो, बिल्कुल. बट जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इस वे में कर रहे हैं, सारे का एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, है ना? जैसे प्रीवियसली जो हम लोगों ने थ्योरी देखा था, आपको याद है ना? जैसे आपका साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है, उसको हमने क्या अज्यूम किया था? सम एम्पलीट्यूड इनटू कोसाइन इनिशियल फेज, एंड कोसाइन ओमेगा टी का जो आपका कोफिशिएंट है ना, उसको हम क्या अज्यूम किया था? सम एम्पलीट्यूड विथ सम साइन का फेज, right? So same I am applying that formula. If you apply,
So it will be like that. A prime cosine theta, A prime sin theta, A prime cosine theta will be this much, and A prime sin theta will be the coefficient of cosine omega t. Now, if you substitute here, what will happen? You will have A prime cosine of theta, but whatever you have said now, that exactly you can follow. You will get same answer. But I'm following same rule. So you'll have this, then sine of omega t plus A prime sine of theta, then cosine of omega t, right? And that will represent A prime kitna jayega? That will be sine of omega t plus theta. Okay, so here A prime, that will be how much? How will represent A prime? So A prime can be, A prime I can represent like this. A prime cosine of theta ka square plus A prime sine of theta ka square. Right? So A prime cosine, A prime can be written like this. If you take A prime ka square common outside of square root, that will be A prime, and then you have cosine square theta plus sine square theta, that will be 1. Now I'll substitute that A prime cosine theta ka square plus A prime sine theta ka square. Substitute kijiye aap. So you have a 2A by 3 ka square plus A by 2 ka square. Okay, and that will be A prime equals to, you have A common, and 4 by 9 plus 1 by 4, right? So we'll have 16 plus 9 by 36. So 5A by 6. Puneet, you got this much, right? 5A by 6. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this will be the amplitude. So जैसे आपका सुपर इम्पोज करने के लिए बोले है ना, सेम फ्रीक्वेंसी का है, तो आपको कुछ नहीं करना है. क्या करना है? इसको ब्रेक करना है. First of all, you have to sum the displacement of all SHMs. Then you have to collect the coefficient of sine omega t. And that you have to assume some amplitude with cosine phase factor, initial phase factor. Similarly, you have to collect the coefficient of cosine omega t, and you have to assume some amplitude with sine phase factor. You have to substitute that, you will get equation of simple harmonic motion, and from there you can calculate the amplitude of resultant motion. Okay, so A always be like, you have a cosine theta का square plus A sin theta का square, है ना? And A cosine theta क्या है? जो sin omega t का जो coefficient है, that will be your A cosine theta. And cosine omega t का जो coefficient है, that will be your A sin theta. That you have to substitute. Okay. अब मैं एक सिंपल, हाँ जी बताइए. मैं बोल रही थी ना वैसे करके, लेकिन एम्पलीट्यूड ए नहीं आ रहा है. ए डैश, हाँ, ए बाय 6 का फैक्टर नहीं आ रहा है. 5/6 आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे? जैसे आपका ए हम बाहर रख रहे हैं. हाँ बाहर रखेंगे आप. तो जैसे आपका बाहर आ जाएगा, राइट, और फिर आप 2/3 को क्या एज्यूम करेंगे, आप बताइए. cos 5 डैश मैंने अज्यूम किया है. cos 5 डैश, cos थीटा डैश 5 नहीं 5, 5, हाँ चाहिए. इसको एज्यूम कीजिए आप. यस. और sin 5 को हाफ को sin 5 अज्यूम किया. नहीं, इसको आप डायरेक्टली इस वे में नहीं कर सकते. इसको आप सम कैसे करोगे? इसको इस वे में नहीं करना है आपको. सम एम्पलीट्यूड ए प्राइम ई प्राइम इनटू कोसाइन ऑफ पाई, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करनी है. क्यों सर? लेकिन नहीं पहले में, हाँ पहले में गलत ऐसा क्या है वैसे अज्यूम? अच्छा, पहले में गलत क्या है? क्योंकि एंगल तो 0 से कम ही हो रहा है ना, मतलब वैल्यू तो 0 to 1 में तो लाई हो रहा है. एंगल, हाँ एंगल तो कम हो रहा है, बट इसमें सर क्वेश्चन क्या है? हाँ, what she is saying that she is assuming that अगर सपोज मान लो आप यहाँ पे जो आपका ये था ना रिजल्टेंट इक्वेशन था, वहाँ सी
collected that first of all she has taken common that a, है ना? a अगर कॉमन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी के साथ कोसाइन साइन ओमेगा टी के साथ 2/3 फैक्टर आ जाएगा एंड कोसाइन ओमेगा टी के साथ 1/3 फैक्टर आ जाएगा. नाउ शी इज अज्यूमिंग दैट 2/3 इक्वल्स टू सम कोसाइन फैक्टर. 2/3 इक्वल्स टू सम कोसाइन फैक्टर. सर हाँ सेमी तो सर आएगा क्योंकि 2/3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1/4 का स्क्वायर करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 5/6. 1 को हम a डैश ले ले या ये ले ले एम्पलीट्यूड नहीं ले नहीं ले. नहीं what she is saying, you see what is सर ऐसा भी करें फिर ए भी ए सेम ही रह जाएगा ना. जी what she is saying ए is ए ही रह जाएगा. she is saying like this: cosine a, then you will have cosine of theta sine of omega t, and Yes sir. then you have a sine of theta cosine of omega t. सर तो आप टेन ए डैश ही तो निकाल रहे सर तो सही आएगा. Now she is saying this will be like a then sine of omega t sine of omega t plus theta. She is saying like that. Yes sir, I'm getting this. Where a is amplitude is a. Saying that this will be the amplitude. She's saying like that. So where is the problem then? Tell me. Sir, Hmm. 2 into a by 3 equal to you have taken some a prime cosine of theta, Mhm. and if we take cosine of theta equal to 2 means 2/3, we don't take care about the amplitude. We just say that the value of the some cosine is 2/3. How can you say specifically about it? Nah, because it is multiplied by some amplitude, and Mhm. then we get the answer. Means how some value is similar to a cosine or sine function is. How can you write that? थीटा Yes. कुछ तो होगा ना. By some Yes. analogy, na? That 2/3 और a/2 दोनों इक्वल थोड़ी हो सकता है सर. exactly. yes, sir. What she is saying, see, she is saying that 2/3 is actually less than 1. 2/3 is less than 1, right? So she is cos theta. saying that you can think like cosine of theta. Maybe this is wrong. Actually, I think that is wrong from that your basic that assumption, right? सर हाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल इस वाले केस में नहीं आएगा अगर हम लोग एम्पलीट्यूड ना कंसीडर करें. exactly. That is the problem. Or what Puneet actually noticed a great actually. What she is saying, जब आप ऐसे करोगे ना, जैसे आपका कोसाइन थीटा को आप 2/3 अज्यूम कर रहे हो, है ना? Then you cannot think that sin theta equals to 1 by. Yes sir. यही issue था. Nothing. So that will be like cosine theta and sine of theta prime. And then you can not summarize. So for that, what you have to take, you have to take whole amplitude of cosine omega t as sum of amplitude with cosine theta, and coefficient of cosine omega t, that you have to think amplitude of resultant wave with some sine theta. Yes It's sir. a very good point that Puneet noticed. It's a good actually. You cannot take same theta, that is the problem. Then you cannot define your equation of motion. Good. Very Yes good. sir. तो ये wrong है. Amplitude. The problem is that you cannot take same theta. That is the problem. Then you cannot summarize. Right? This is the problem. You cannot decide what kind of motion it will be. So that's why you have to think that coefficient same. Now, if I ask another question from SHM, this is also problem. So suppose you have a equation of SHM. This is the equation of SHM given. Equation of SHMs given. That you have a equation of SHMs like A naught, then A sine of omega t plus B cosine of omega t. Okay, A sine of omega t, then B cosine of omega t. Now you have to find that amplitude of resultant wave. You have to find that amplitude of resultant wave. कर लोगे ये? यस सर. बताइए कैसे करेंगे?
then we have to take the three things like xt equal to x1 plus x2 plus x3 and then just add them. Now We'll you get- see, this is the equation of SHM is given. If you Yes. equation of SHM is given, अगर equation of SHM अगर लगाओगे, so what you can say? फॉर्म में लाना Given पड़ेगा. SHM के लिए क्या होगा आपका del square x by dt square. That will be equals to how much? Minus omega square x. Right? This is the equation of SHM. जरा इसको del square x by dt square कीजिए जरा. इसको अगर del square x by dt square, हाँ तो फिर क्या आ जाएंगे आपको बताइए जरा. अगर del square x by dt square करेंगे, यहाँ से क्या आ जाए आपका minus omega square and then you have what? A sin of omega t plus b cosine of omega t, and that will be equals to minus omega square a naught plus a sin of omega t plus b cosine of omega t. ठीक है ना जी. और फिर यहाँ से क्या पता चल रहा है बताइए. सो दिस इज साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट आ जाएगा सेम, कोसाइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा. और यहाँ से क्या पता चल रहा है बताइए जरा. दैट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल्स ए नॉट इक्वल्स टू हाउ मच, टेल मी. हाँ जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर दोनों साइड का आप कंपेयर करेंगे, 0. हाँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट इज हाउ मच है, दैट विल बी 0. यू कैन चेक, है ना. साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, है ना. आप कैंसिल कर दीजिए, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. यानी बचा क्या है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू 0. It means basically what? Omega is frequency that cannot be 0. So you have a naught that is equal to 0. And that was the main trick. ये आपको a naught का ही प्रॉब्लम था. अगर जनरल हिसाब से आप करने चलते तो आई थिंक थोड़ा टफ होते. तो अगर यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आपका कि इक्वेशन ऑफ SHMs, so that should follow this kind of differential equation. If you differentiate this, you will obtain that a naught that is provided, that is actually 0. Now you can easily calculate. So this is your a naught is 0 actually. आप बताइए कितना आ जाएगा. a sin of omega t plus b cosine of omega t. Can you tell me now? So again you can think that like a prime cosine of theta, that will be how much? That is a prime sin theta, that will be equal to b. You can substitute it here, then we'll obtain a sin of a prime sin of omega t plus theta. It means a prime will be how much? That will be, so if that will be a prime cosine theta ka square plus a prime sin theta ka square. And that will be your basically a square plus b square. That will be your a square plus b square. So the amplitude of SHMs, that equation is given, the amplitude will be how much? That will be a square plus b square, because a naught, that a constant was given, that will be equals to 0. From that SHM equation you are getting that. When a naught is 0, then it is very easy. Just coefficient of sin omega t, that will be some cosine factor, and this will be some sine factor. From there you can easily calculate that amplitude. And this was also from previous year. सर हाँ जी बताइए. सर क्वेश्चन था, क्या प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि ये एसएचएम मोशन दे रखा है? Exactly. ओके ओके सर. SHM given था. सर हाँ जी. बीच में मेरा 2 सेकंड 1 मिनट के लिए इंटरनेट चला गया था. ए नॉट आपने 0 लिखा है क्या? मतलब ए नॉट 0 आ रहा है क्योंकि आपका क्या गिवन था, इक्वेशन ऑफ SHM वाज प्रोवाइडेड. जब आपका SHM इक्वेशन गिवन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द स्टेटमेंट, in the question statement it was clearly mentioned this is the displacement of simple harmonic motion, है ना. xt equals to a naught plus a sin of omega t plus b cosine of omega t is mentioned. This is the equation of displacement. Displacement for simple harmonic motion. तो simple harmonic motion के लिए displacement है तो फिर acceleration क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा. यस. हाँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x और acceleration del square x by dt square acceleration. तो डेल स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर जब निकालेंगे तो फिर यहाँ से आपका ए नॉट नहीं रहेगा, आपका सिंपली क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी.
और राइट साइड पे क्या होगा, डेल स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, Yes. और एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से आपका ए नॉट 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी लेफ्ट एंड राइट का कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोसाइन वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग टर्म दैट विल Okay, बी sir. ओमेगा स्क्वायर ए नॉट इक्वल्स टू 0. Okay. एंड इट इज मेंशन्ड इन दैट क्वेश्चन, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन था इसीलिए आपका हमने किए हैं, है ना. ओके, now we are going to enter that superposition of two perpendicular SHM. Two perpendicular SHMs. Superposition of two perpendicular SHMs, and this is basically your Lissaj's figure. Okay, so that you have a two perpendicular SHM. In that SHM, so you have a, one is oscillating along x direction, and that is oscillating along y direction. Now, if you place a particle in two perpendicular SHMs, then what kind of trajectory that particle will be followed? So that we are going to look, and that is basically called Lissaj's figure. So let us take two simple harmonic motion. One is along xt, that is along x direction, that is oscillating with amplitude. I'm taking a sine of omega t plus initial phase I am taking phi, and that simple harmonic motion along y direction I'm taking amplitude, that is b sine of omega t plus phi. So I must say, when you place a particle in two perpendicular SHMs, the trajectory followed by the particle will be depends upon three factors. First of all, their frequency ratio of two oscillator. यहाँ पे अगर देखोगे इस ओमेगा एक्स इज टू ओमेगा वाई एक्चुअली कितना है बताओ, कितना है, ओमेगा एक्स along x axis that oscillator having frequency that is omega, for y axis that is this 1:1. So trajectory of the particle will be followed, that will be depends upon frequency ratio. Not only that, that will also be depends upon the amplitude and also the phase. Well, so here I've taken phase like plus phi, right? Please remove that. Haji, Haji. How it will write 1:1? 1:1. See, you have omega x means what? The frequency of SHMs along x direction, है ना? So xt मतलब along x direction में जो SHMs है उसका जो frequency है उसको हम बोलते हैं omega x. Omega y frequency of simple harmonic motion along y direction. So this is your omega y. So omega x is omega, omega y is omega. So their ratio will be how much? That will be 1. है ना? And please remove that phase. I have added phase for y direction that SHM. So I'm not taking any phase, है ना? I'm taking phase 0 here. So we have two oscillator with initial phase phi for x direction, and for y direction that phase is 0. So y direction phase 0 means क्या है यहाँ पे? Can you anyone tell me कि ये जो आपका y direction में simple harmonic motion जो हो रहा है उसका initial phase कितना है? 0 लिया. इसका मतलब क्या है जी बताइए anyone? Start 0 से ही हो रहा है. Start 0 से हो रहा है इसका मतलब क्या है? Can you please elaborate what are you trying to say? Start 0 से हो रहा है मतलब? सर इसका एम्पलीट्यूड जो होगा Y direction vibration is lagging behind the नहीं, phi. you are adding some in plus some SHMs you are adding phi. In some places you are not adding. So what is the meaning of that? x और y में phase difference होगा. जब आप कोई फेज ऐड नहीं कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आपका पार्टिकल्स जो स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0. यहाँ पे देखो ना, अगर t को 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y क्या होगा आपको मिलेगा? 0. इसका मतलब कहाँ से जर्नी शुरू हो रहा है? 0 मिन पोजीशन से जर्नी शुरू हो रहा है. यहाँ पे सम मिन पोजीशन पे नहीं है बिकॉज ए साइन ऑफ फाई, सो दैट विल बी सम अदर प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फाई. ओके, सो नाउ यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई राइट दैट साइन ऑफ ओमेगा टी दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी y by b.
sine of omega t from this equation, that will be y by b. Now from x, this equation, from this equation what I can write? So this equation will provide you this, and this equation, from this equation I can write x by a, that will be x by a, that will be sine of sine a plus b, sine of omega t cosine of phi plus cosine of omega t, cosine of omega t sine of phi. Right, now cosine of phi sine of omega t, that is how much? That will be y by b. And cosine of omega t, that will write square root of on minus cosine के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? स्क्वायर रूट ऑफ ऑन माइनस साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपका कितना है? y बाई बी है, तो यहाँ y बाई बी सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. यहाँ पे कोसाइन ओमेगा टी, दैट आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ ऑन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर इज हाउ मच? y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एंड देन यू हैव साइन ऑफ phi. Then you have sine of phi. It means basically I can represent, if I bring that term on the left hand side, so you have a x by a minus y by b cosine of phi. Okay, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस वाला टर्म को लेके आया है ना, और देन यू हैव on the right hand side on minus y square by b square sine of phi. Now if you square both sides, now if you square both sides, then what will happen? Tell me. If you square both sides, you will have x square by a square minus 2xy by ab cosine of phi plus y square by b square cosine square phi, that will be equal to how much? On minus y square by b square sine square phi. Now you can, if you bring this term, tell me what will happen. If you bring this term on the left hand side, so you have y square by b square, that will be common, cosine square plus sine square, that will be how much? On. So basically I can remove, I can bring this term on the left hand side, so you'll have remaining here, that will be simply sine square phi, and then this cosine square factor will be absorbed, because that will be cosine square phi plus sine square phi, that will be nothing but on, so you'll have factor y square by square. So this is the equation of, so that motion or trajectory of the particle will be followed this kind of equation. Trajectory of the particle will be followed this kind of equation when you place a particle in two perpendicular simple harmonic motion. Now this trajectory will be depends upon what? It will be depend upon a, b, okay, cosine phi and so on. So this is the general equation that is representing that what? Trajectory of the particle. Now also I have said that the trajectory will also be depends upon omega. यहाँ पे आपको omega दिख नहीं रहा है, but it will also be depends upon omega. क्यों डिपेंड करेगा? जब हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई का क्या मीनिंग है. वाई इट इज डिपेंडिंग अपॉन फेज, जो आपका ट्रैजेक्टरी होगा पार्टिकल का, why it is not only depends upon a, b and phi, but also it depends upon that frequency ratio. In the next case when we will discuss, then it will be clearly visible. So now you can see here that your trajectory will be depends upon what? It will be depends upon a, b, phi. Not only that, that will be depends upon omega x and omega y, that will be visible in the next cases. But let us discuss that what kind of trajectory you will notice. तो किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगा पार्टिकल का, किसका वेरियस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा. सो हम, हाँ जी बताइए. cos phi पे डिपेंड करेगा. हाँ, फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑल्सो ए बी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. ए बी क्या है आपका? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा. तो वी आर गोइंग टू सी दैट ट्रेजेक्टरी किस तरह से डिपेंड होगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड ट्रेजेक्टरी डिपेंड्स अपॉन ए, बी, ओके, ऑल्सो फाई, ऑल्सो द रेशियो ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई. Okay, now we'll say different cases. हाँ जी बताइए. Voice is not audible. Can you please tell me, repeat?
हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? नॉट एक्चुअली ऑडिबल। पुनीत, हाँ सर, आवाज उनकी सुनाई नहीं दे रही सर। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना? यस सर। Can you please repeat? It's not audible actually. Otherwise, you can chat. I'll give that answer. Okay. So the trajectory will be depends upon what phase. So if you take in first case, if you take phase in first case number 1, if you take phi equals to 0, now tell me what will happen if you take phi equals to 0. If you take phi equals to 0, what will happen? That equation, tell me. So if phi equals to 0, then what will happen? So here you have that sine phi. This will be how much? 0 sir. 0. And this will be how much? 1 sir. 1. So x square by a square minus 2x y by ab plus y square by b square. That is nothing but what? Trajectory is linear. Obviously, it will be linear. So if you substitute phi equals to 0, that will actually will get this kind of equation: x by a minus y by b square equals to 0, which implies that y equals to यहाँ से क्या आ जाएगा? x by a minus y by b, that is equals to 0. It means y equals to b by a into x. Okay, so y equals to b by a into x. So you can show that trajectory. What kind of trajectory it will be? So this side you have a y, this side you have a x, this side you have a y. So when x is 0, this is the trajectory of the particle. So when x is 0, y is how much? Y is also be 0. जब x 0 होगा particle का, position of y that will also be 0. And when x is a, maximum x कितना हो सकता है? Maximum x कितना हो सकता है जी? How much will be the maximum x? 1 sir. If you remember, x was like a sine of omega t plus phi. So maximum x can be how much? That will be a. When x is a, y will be how much? When x is a, y will be b. B sir. B. B. So this is the a. So the location of the particle will be here. When particle is at x equals to a, location will be here b. Now minimum x कितना हो सकता है? That will be minus of a, right? So when x is minus of a, y will be how much? Y will be how much here? So minus minus a of b. minus of b. So minus of b means. Okay, so this kind of trajectory will be followed by the particle. If you place a particle in two perpendicular SHMs, and if they have different phase, so that trajectory will be this kind of trajectory. So this was like a very simple case, है ना? ये तो आपको clearly differential equation से आपको पता चल जाएगा. You are getting linear equation. Now in case number, in other arbitrary phi, how will calculate? That is the main thing. जैसे सपोज मान लीजिए मैं केस नंबर 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने phi equals to pi by 4 ले रहा हूँ. अगर phi equals to pi by 4 जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको मिला है, वहां पे अगर आप phi equals to pi by 4 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, so can you from if you substitute that phi equals to pi by 4 there, then that equation you will get from there. I think it will be very difficult to obtain that kind of trajectory. What kind of trajectory it will be? But more general way में आप कैसे करोगे इसको? जैसे मैंने बताया आपको कि अगर सपोज मान लीजिए phi equals to pi by 4 जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, वहां पे सब्स्टिट्यूट, जैसे आपने phi equals to 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये you clearly easily obtain that equation, right? That was a linear equation. Now if you substitute phi equals to pi by 4, now if you try to obtain that trajectory, and it will be very difficult. So how will calculate the trajectory in more general way? कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रैजेक्टरी को, बताओ.
So when you have phi equals to pi by 4, tell me, I will calculate. So have a case A phi. is equal to A sine So you have a x equals to what? A sine of omega t plus phi. omega t plus pi by 4, right? And y equals to e of sine of omega t. So you have a omega t. I'll see the location of the particle for different time. So I'll take omega t for different time where the particle will be. And this side will try to plot it. This side you have a x, this side you have a y. Someone mic is on. Anji. Can you please mute mic? Someone mic is. Can you please mute your mic? Who is this? So इधर maximum displacement कितना है? This will be how much? This will be how much? This is 0, 0, right? This will be how much? This will be maximum amplitude of x, that will be a. And this है ना, यहाँ से भी पूछता है, जैसे आपका ट्रेजेक्टरी दे दिया और फिर पूछा जाएगा, है ना, ट्रेजेक्टरी देके पूछा जाता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू कितना होगा, है ना, इसका गिवन होता है, ट्रेजेक्टरी में पूछा जाता है कि ए कितना होगा, है ना, यहाँ पे बी का वैल्यू पूछा, सॉरी यहाँ पे आपका वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गिवन होता है ना, ट्रेजेक्टरी देके आपका मैक्सिमम जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर बी। तो ये आपका ट्रेजेक्टरी देके भी पूछा जाता है कि ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, एंड सो ऑन। Now what I'm trying to see actually, so this is your maximum displacement along x direction, that is a from this equation, along y that will be b, that will be. Now for different time I'll see that location of the particle. So initially at t equals to 0 omega t will be how much? That will be 0. So where will the location of the particle? अगर यहाँ पे 0 substitute कर दोगे क्या आ जाएगा आपका? If you substitute 0 here, what will happen? A sine of pi by 4, that will be a by root 2. Under root 2. And what about location of the particle along y direction? 0. 0. So initially the location of the particle will be here, that will be a by root 2 0. So a by root 2 0 means here it will be. Then if you substitute pi by 4 at next time, है ना, t equals to 0 पे omega t equals to 0 है, then next instant I'm taking, that is omega t value, that will be pi by 4. Now what will happen if we substitute pi by 4 at next instant पे कहाँ पर होगा? So that I have taken omega t equals to pi by 4. So pi by 4 plus pi by 4, that will be pi by 2. So location will be a, and यहाँ पे क्या आ जाएगा? Y direction में कहाँ पे? b by root 2. So a and b by root 2 will be here. And then next instant क्या ले सकते हो आप? pi by 2 ले सकते हो. Pi by 2 में कितना आ जाएगा बताओ? That will be a by root 2. You can check. And this will be how much? This will be b. So a by root 2 and b will be here. Next 3 pi by 4. 3 pi by 4 अगर लोगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ? That will be 3 pi by 4 plus pi by 4. That will be how much? Pi. So along x direction that will be 0. Along y direction that will be how much? B sine of 3 pi by 4. That will be b by root 2. So you can define that location will be somewhere here because 0 and b by root 2. Right? Then in the next instant what will happen? Pi by कहाँ पे है? Pi पर, right? Pi पर कहाँ पर आ जाएगा? If you substitute pi here, so pi plus pi by 4 that will be minus pi by 4. At pi, I'm taking pi, so pi plus pi by 4, that will be minus sine pi by 4. So that will provide you minus a by root 2. And what about here? कितना आ जाएगा? That will be 0, right? Sine pi is 0. So minus a by root 2 0 means it will be located somewhere here. Okay. Similarly, in the next instant, pi plus pi by 4, 5 pi by 4 पर कहाँ पे होगा बताओ? 5 pi by 4 means what? 5 pi by 4 plus pi by 4, that will be how much? 3 pi by 2, right? 3 pi by 4, 3 pi by 2 means here it will be sine pi plus pi by 2, that will be minus sine pi by 2. So at 5 pi by 4 पे कहाँ पे होगा? That will be minus a. And here it will be how much?
क्या जाएगा माइनस ए माइनस b by root 2. You can check. Then the next instant what will happen? 5 pi by 4 plus pi by 4. That will be how much? 3 pi by 2. And in 3 pi by 4, 3 pi by 2. So this location you can represent where? It will be here, right? Minus a minus b by root 2. Then next 3 pi by 2 पे कहाँ पर होगा पार्टिकल बताओ? minus a by root 2. Minus a by root 2. And then minus b. Yes, sir. Minus b. So it will be here. And similarly, in the next instant, you can get here. And next it will be here. So trajectory you can see from here. तो इसमें आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं, इस तरह की आपको kind of trajectory will obtain. So this is called basically oblique ellipsoid, है ना? तो इसमें मेरा कहने का पर्पस क्या है कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है या डाटा गिवन है कि इनिशियल फेज इज पाई बाई 4 and 0 with amplitude this and frequency ratio is this and at इतना फेज पर कितना होगा, सपोज मान लो आपका फेज गिवन है पाई बाई 4 और आपको पूछा गया है कि ट्रैजेक्टरी कितना होगा, तो आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, इस रूट से आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट फॉर डिफरेंट टाइम. इनिशियल कहां पर होगा पार्टिकल, नेक्स्ट इंस्टेंट पर कहां पर होगा, नेक्स्ट इंस्टेंट पर कहां पर होगा, उस लाइन को जोड़ दोगे तो फिर आपको इसमें क्या है कुछ याद करने का जरूरत नहीं कि 5 पे इस तरह की होगा, है ना? क्योंकि फ्रॉम जनरल इक्वेशन for any arbitrary phi it is very difficult to find the trajectory. So that's why nothing you have to do, nothing, no more calculation, nothing you have to do, just you have to take that your equation of SHMs and you have to calculate, you have to take that position, you have to calculate the position of the particle or you have to find the position of the particle for different time, initially where it will be, in the next instant where it will be, and so on. And if you add them you'll get that kind of trajectory. And same that पहले वाला केस में भी मैंने क्या किया था, जैसे ओरिजिनल इक्वेशन से ड्राइव किया था, यू कैन डू फ्रॉम हेयर ऑल्सो, इसको आप मिटा दो, है ना? यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. And same you can I mean you can try to find that trajectory for other case also. I mean find trajectory, you try it, you know, by using same rule, whatever rule I have shown, whatever rule I have given, same rule you can apply and you can find the trajectory for other phi. For phi equals to pi by 2, then 3 pi by 4, then pi, 5 pi by 4, है ना? 3 pi by 2, 7 pi by 4, 2 pi. Let's try to find that trajectory for different. Please try it. Okay. अब जैसे आपका ट्रेजेक्टरी, जैसे आपका समझ मान लो आप पाई बाई 2 के लिए कैलकुलेट करोगे, so I'm saying this when you will calculate the trajectory for pi by 2 you will get kind of ellipse, आपको ellipse shape मिलेगा, you will get kind of elliptical shape, but this elliptical shape will be converted to circle. कब सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा? जब आपका a equals to b हो जाएगा, जब आपका दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा, then it will be kind of what? It will be kind of circle. So you will all notice that when you will take phi equals to pi by 2 and you will calculate the trajectory, it will be ellipse. But when that amplitude is same, then you will get kind of circle. Just if you substitute that x equals to I mean a equals to b, you will get kind of circle. So that's why I said that trajectory is not only depends upon phi, है ना? इस phi के ऊपर depend नहीं करेगा, that will also be depends upon this amplitude. Not only that, that will also be depends upon that frequency ratio that we are going to see in the next class. Okay, in tomorrow's class. Okay, and you will get beautiful trajectory when that you will take different frequency ratio, like that frequency ratio is like 2:1 or 3:1. Then you will get beautiful kind of equation. I mean trajectory, kind of 8 shape and so on. So that we are going to see in the next class. But please try to find the trajectory for different phase using same rule. Whatever I have shown you, nothing you have to remember. The thing is that important thing is that nothing you have to remember. Just you have to take that
your displacement equation, and you have to find that location of the particle for different time. Initially where it will be, in the next instant where it will be, and you have to collect that data. So no need to remember anything. Okay, that is the thing. Okay, I'll stop here. In the next class tomorrow we'll going to, but please try to find that trajectory for different fields. In the next class we will see for different. सर एक छोटा सा डाउट था सर. हाँ जी बताइए. सर अगर हमारा जैसे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 1 दे रखा है और y इक्वल्स टू b साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 2 दे रखा है, तो सर जो हम लोग फेज डिफरेंस ले रहे हैं phi इक्वल्स टू पाई बाय 2, सो हम लोग डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अज्यूम करके प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, फेज के लिए. डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 लेके, हाँ हाँ हाँ, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 फेज लेके कैलकुलेट कर सकते हो. एग्जैक्टली. ओके सर. ओके सर. बट जैसे आप कैलकुलेट करोगे, सपोज मान लीजिए आपको आता नहीं, तो फिर आप जनरल जो रूल है उसको फॉलो करोगे. नहीं, जैसे सपोज मान लीजिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 गिवन है, तो डायरेक्टली फॉर डिफरेंट टाइम यू हैव टू टेक दिस ओमेगा टी वैल्यू एंड यू हैव टू फाइंड दैट. नथिंग यू हैव टू रिमेंबर. थिंग इज दैट अगर आप सपोज मान लीजिए भूल गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है. जस्ट आप क्या कीजिए, फॉर डिफरेंट टाइम पे आप 3-4 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए. सारे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो ऑप्शन गिवन होगी ना, वहाँ से क्लियरली मैसेज जाएगी. Okay. Someone else was asking. हाँ जी. Sir, you have derived the equation x square by a square. That equation is the equation. Is the trajectory? It is the trajectory equation. It is not the equation of resultant SHM. हाँ, resultant SHM का मतलब क्या है? जैसे आपका दो पार्ट. Because in superposition means we know adding the two equation of motion. Why I am saying that trajectory? You know why I am using this term trajectory? So basically you have a two, you have a two perpendicular SHM, and you are placing a particle in two perpendicular SHMs. Then what kind of trajectory it will be followed? You have two perpendicular SHMs. Now if you place a particle in two perpendicular SHMs, so then what kind of equation trajectory it will follow? Okay, sir. But in superposition, in case of x1 and x2, that is oscillation along x-axis, we add the two equation of motion, x1 plus x2, and get the final expression. So what is the difference between these two cases? I mean, thing is same, like because x equal to x1 plus x2 in the previous case, and here we substitute the expression of sine omega t from one equation and put it in the second expression in the other equation, and we get the final trajectory equation. What is the difference between these two? Again, there's no difference here. This is also like you can think that you have a two SHM in previous because the resultant resultant equation. Because the resultant equation is SHM, resultant motion. Resultant motion is SHM in the previous case. But here also it will be. Here also it will be the resultant motion will be SHM. SHM, it will be SHM, but it will not be SHM in linear. This will be in XY plane. This will be in XY plane because you have two perpendicular SHMs now. In previous case, what you have? आपका दो SHMs linearly x direction पर ही था, तो दो SHM x direction पर ही था, वहाँ पे एक पार्टिकल को अगर छोड़ दोगे तो किस तरह की ऑसिलेशन करेगा? That will be SHMs in x direction with different amplitude. यहाँ पे क्या है, दो perpendicular SHMs है, एक x direction पर है, एक y direction पर है, और वहाँ पे linearly ऐड भी तो नहीं कर सकते ना? हाँ जी, नहीं, ये इसको linearly ऐड नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, because one is along x direction and there is along y direction. So how can I check acceleration proportional to minus displacement in this case? That is actually thing. How will check that? I have this doubt from beginning. I have this doubt from beginning. Yes. Beginning of today's so class. How will check that? How will check that acceleration proportional to minus r vector? Exactly. How will check that? If I introduce r vector, display r vector equal to xi cap plus yj cap. So if you have a r vector is like xi cap plus yj cap, and then now if you find that x equal to a sin omega t plus phi.
and y equal to exactly b so sin. it will be like you'll get minus r. आप चेक कर सकते हैं इसको इस केस From in this way I can check you acceleration. can someone Rajkishore was given a question like that in last yesterday night, so it was like that. You can check like that also. So this r vector, so this expression of r vector is the resultant equation of motion of resultant SHM. Exactly. And x square by x square, a square plus y square by b square, that equation is the trajectory equation. Exactly. What kind of trajectory it will be followed. Okay, sir. Okay, sir. But how will calculate? आपको अभी तो लग रहा है कि इजी है, एग्जाम में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ आपको वहां पे देखने का जरूरत नहीं। मेरा कहने का पर्पस यही है कि ट्रैजेक्टरी किस तरह की फॉलो होगा, आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं। अगर बेसिक इक्वेशन आपका क्लियर है तो यहाँ से आप क्लियरली, I have understood, sir. हाँ, आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या गिवन होगा, पैरामीटर गिवन होगा, वहां पे कुछ याद करने का जरूरत नहीं, ट्रैजेक्टरी आप फाइंड आउट कर सकते हो। That is the thing. Okay, sir. Here we are interested to find the trajectory of the particle present in the field of 2 SHM. Two perpendicular. Present in the presence of two perpendicular SHM. So that will be in plane, no longer in linear. That is the thing. Okay. And you can clearly obtain from basic thing. Okay. Okay, sir. Okay. Tomorrow we are going to see another interesting thing, that is for different frequency ratio. So how it will be actually. Sir, हाँ जी। जो ये बोल रहे थे ना, उसका आपने बताया कि एक्सेलरेशन ऐसे लेके हम। आपका आवाज क्लियर नहीं है जी, बहुत ही स्लो है। हेलो सर। हाँ जी। अभी जो इन्होंने पूछा था ना, तो आपने बताया था कि एक्सेलरेशन ये है, हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सर कैसे मतलब करेंगे हम, मतलब कैसे SHM ये करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कपल टर्म्स है ना। कपल टर्म्स है तो फिर आपको यहाँ पे ये तो लीनियर तो ऐड नहीं कर सकते हो, दोनों एक्स वाई डिफरेंट डायरेक्शन पर है, तो आपको जो आपका आर वेक्टर ये डिफाइन करना पड़ेगा। आर इज लाइक एक्स वाई एंड वाई जे। तो बेसिकली क्या होती है, जैसे आपका एसएचएम में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, तो यहाँ पे भी टू एंड फ्रो मोशन होगा। आफ्टर टाइम 2 पाई ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई इट विल बी रिपीटेड, है ना। और आर दिस इज द पोजीशन वेक्टर, जैसे एक्स एक डायरेक्शन पर होता था फिर आप एक्स करते, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर लेना पड़ेगा। तो द आर वेक्टर दिस इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और आपको पता है कि एसएचएम के लिए क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस आर होती है। तो जैसे आर इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई जे का इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, so you'll get basically minus proportional to r. So that's why it's, I mean, it will be kind of SHM. But tomorrow we are going to see more. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. हाँ जी। थैंक यू सर। सर अगर x में डेल्टा 1 एंड y में डेल्टा 2 फेज दिया हुआ है, तो वहां पर ओमेगा टी को ही वैल्यू पुट करके एग्जैक्टली आप ओमेगा टी सेम रूल, जस्ट इनिशियली कहाँ पर है आप देख लीजिए, फिर टाइम को बढ़ाते जाइए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स एंड वाई को निकालनी है फॉर डिफरेंट टाइम और पॉइंट को लोकेट करनी है एक्स वाई प्लेन पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। चाहे कोई भी डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 गिवन है, चाहे कोई भी ओमेगा गिवन है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है जी। ओके सर।